Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn Fundamental Rights Part 2. In the last chapter we have studied about the Fundamental Rights Part 1. In it we have understand about the right to liberty, right to equality and the right against exploitation. And today we will going to study about the Fundamental Rights Part 2 and we will also get in it included the right to freedom of religion. Our second point is cultural and educational rights. Our third point is right to constitutional remedies and our fourth point is worded as a constitutional remedies. Reads as a constitutional remedies, and we should also get acquainted about the judicial protection available from the fundamental rights. Now we will see our first point, that is the right to freedom of religion. India we know is an important secular country in the world. इंडिया ये सभी पूरे वर्ल्ड में से ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेक्युलर कंट्री है. वी हैव लर्न इट इन द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज द सेक्युलर? सेक्युलर मीन्स द ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड टू बी द इक्वल. हमने प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि सेक्युलर क्या है. सेक्युलर सभी जो धर्म है उसको एक समान माना जाता है. तो इंडिया ये सबसे सेक्युलर कंट्री है पूरे वर्ल्ड में से. बट वी शुड ऑल्सो गेट क्यूरियस अबाउट व्हाट डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज. सो इट इंक्लूडेड द our right to the freedom, our right to freedom to practice any religion and can establish the institution for the religious regions. तो हमको ये भी एक्साइटेड होना चाहिए कि हमारे संविधान में क्या लिखा गया है, क्या दर्शाया गया है. तो उसमें क्या दर्शाया गया है कि हमको स्वतंत्रता है कि हम कौन से भी रीजन का धर्म का पालन कर सकते हैं और धर्म के संस्था है उसको स्थापित कर सकते हैं अलग अलग धर्म के रीजन्स के लिए. इन इट 2 थिंग्स आर नॉट परमिटेड. उसमें 2 थिंग्स जो है वो अलाउड नहीं किए गए हैं. फर्स्ट इज state cannot impose religious taxes that might be encouraged for the particular religion and our constitution forbids these types of religious taxes. तो जो स्टेट है ये लागू नहीं कर सकता, रिलीजियस टैक्सेस लागू नहीं कर सकता जो कि दूसरे रिलीजन को बढ़ावा देता है. और हमारा जो संविधान है ये इसको फॉरबिट, ये इसको अलाउ नहीं करता, रोकता है रिलीजियस टैक्सेस को. सेकेंड वन इज द रिलीजियस एजुकेशन कैनॉट बी मेड कंपल्सरी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट रिसीव्स द एड फ्रॉम द स्टेट. तो जो रिलीजियस एजुकेशन धर्म का जो शिक्षा है उसको शिक्षा संस्था में कंपल्सरी नहीं रखा गया है. कौन सी एजुकेशनल संस्था जो कि स्टेट से मदद लेती है उसमें धर्म का जो शिक्षा है उसमें अलाउ कंपल्सरी नहीं किया गया है. सो आवर फर्स्ट पॉइंट गेट कंप्लीटेड, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नाउ वी विल सी आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. We can see that there are the great variety of festivals, foods and the ways of life. We may have seen that the differences in the different types of ceremonies that we have attend. तो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, फूड होते हैं, जीने के प्रकार होती है हमारे कंट्री में. और हमने ये भी देखा होगा कि हम अलग अलग जो शादी होती है उसमें जाते हैं तो अलग अलग टाइप से वो शादी सेलिब्रेट करते हैं. ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड देयर कल्चर्स. तो ये जो सभी होते हैं ये अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जो समाज के संस्कृति होते हैं इसके पार्ट्स होते हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन द राइट्स डिफरेंट कम्युनिटीज द राइट टू प्रिजर्व द कल्चरल यूनिकनेस. तो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है सभी कि वो अपने जो कल्चरल संस्कृति की जो यूनिकनेस है उसको रक्षित कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ राइट द सिटीजन्स आर नॉट ओनली टू प्रिजर्व देयर ओन स्क्रिप्ट, लिटरेचर एंड द लैंग्वेज बट कैन ऑल्सो मेक द एफर्ट्स फॉर देयर प्रमोशन. तो इस टाइप के अधिकार से जो सिटीजन्स है ये सिर्फ
मतलब ये रक्षित नहीं कर सकते, मतलब ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और लिटरेचर का ही रक्षित नहीं कर सकते, बल्कि वो एफर्ट्स भी कर सकते हैं अपनी खुद की तरक्की करने के लिए। एंड दिस आर दे कैन बी इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ देयर लैंग्वेज, और वो संस्थाएं भी स्थापित कर सकते हैं उनकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए, उनकी लैंग्वेज की सुधार के लिए। सो आवर सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो गेट्स completed, that is the cultural and educational rights. Now we will see our third point, that is the right to constitutional remedies. In case of encroachment of fundamental rights, the Indian citizens right to get the judicial remedies is also the fundamental right, and this is called as the right to constitutional remedies. संवैधानिक हक, अधिकार, सुधार। अगर किसी को संवैधानिक अधिकार पर अतिक्रमण लगने पर भारतीय नागरिक को अधिकार है कि न्यायिक उपचार, यह मौलिक अधिकार है, इसको संवैधानिक सुधार अधिकार हक कहते हैं। एंड दिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज प्रोवाइडेड द पीपल्स टू देयर राइट्स डज नॉट गेट द वायोलेटेड। तो जो हमारा जो भारतीय संविधान अगर लोगों के अधिकार में बाधा, अड़चन आदि यह स्वयं संविधान कहता है कि कानूनी सहायता ले। Sometimes the rights that are guaranteed to us by our constitution and it get the encroached upon us and we are not able to exercise about that right. तो कभी कभी जो अधिकार संविधान ने अधिपत्रित किए हैं और कभी भी जो अधिकारों पर अतिक्रमण होते हैं और उसका हमको पता भी नहीं चलता, तो इसको क्या कहा जाता है? अपने अधिकारों का उल्लंघन कहते हैं। मीन्स द infringement of our rights. The courts considers our investigation, what does it tells in the court that considers, investigate it, and it considers the right where indeed been infringed upon us, have been infringed upon us. Injustice has been done to aggravate to the individual, the court gives an appropriate verdict. तो जब इसका उल्लंघन हुआ है और पीड़ित के ऊपर अन्याय हुआ है तो ये न्यायालय उसका उचित फैसला देती है। Our third point is also gets completed, that is right to constitutional remedies. Now we will see our fourth point, that is the writs as a constitutional remedies. So the courts has the power to issue various kinds of writs to protect the rights of the सिटीजन्स। तो जो कोर्ट है उनके पास पावर होती है कि जो लोगों के अधिकार है उसको वो रक्षित कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द हेबियस कॉर्पस। Habeas corpus, the protection from the unlawful arrest and the detention। तो ये हमको क्या प्रोटेक्शन रक्षित करता है कि अकानूनी अरेस्ट और बंदी से ये हमको प्रोटेक्शन करता है। सेकेंड वन इज द मैंडामस। Mandamus, the order of the courts, Supreme Court and High Court, commanding the government to perform an action and it is its duty to perform in the public interest। तो जो ऑर्डर, जो आदेश होता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो गवर्नमेंट को इस पर कार्य करना होता है, परफॉर्म करना होता है, एक्शन करना होता है, ये उनकी ड्यूटी है, उनको कार्य करना होता है लोगों के हित में। थर्ड वन इज द प्रोहिबिटेशन। Prohibition to prevent the subordinate court from exceeding its jurisdiction. Fourth one is the quo warranto. I am roughing this.
warranto, to restrain person from acting in an office in which he is not entitled. तो ये रोक कर रखता है एक व्यक्ति को, एक उसका वो अधिकार नहीं है उस ऑफिस पर, तो वो उसको रोक कर रखता है. What is quo warranto? Fifth one is the certiorari. Certiorari, to order the removal of the law suit from a subordinate court to the superior court. And our fifth point is certiorari is also completed. The fundamental rights are protected by the courts and the citizens has to be exercise these rights with an enjoyful. तो जो फंडामेंटल मूल और मौलिक अधिकार जो होते हैं ये कोर्ट उसको रक्षित कर रखता है, जिससे जो भारतीय नागरिक होते हैं ये इसका इंजॉयबल कर सकते हैं अपने अधिकार का. सो ड्यू टू दिस राइट्स देयर आर द पीपल्स कैन बी अलर्ट, responsible and fulfill their roles like the alert, responsible and active citizens. तो इसकी वजह से अपनी जो रोल्स होते हैं, कार्य होते हैं, वो फुलफिल कर सकते जैसे अलर्ट, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी और एक एक्टिव पर्सन की तरह. सो आवर लेसन इज कंप्लीटेड, दैट इज फंडामेंटल राइट्स. Part 2 we have learned about already the part 1. In it we have seen that right to freedom of religion. Our constitution has given the right to practice any type of religion and can establish the institutions for the religious reasons. And it two things are not permitted, like the state cannot impose the religious taxes that might be encourage a particular religion, and our constitution forbids religious taxes. Our second was the religious education cannot be made compulsory in the educational institutions who receives the aid from the state. Our second point was the cultural and educational rights. In it we learn that our constitution has given the different communities the right to preserve their cultural uniqueness. Our third point was the right to constitutional remedies. In it we have learned that sometimes the rights that are guaranteed to us by the constitution may get the encroached upon us, and this is known as the infringement of our rights. And we have learned about the fourth point, that is the writs as a constitutional remedies. In it we have learned that habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and the certiorari. So our lesson gets completed, that is fundamental rights part 2. Jai Hind.